All right, so yesterday we discussed this क्वेश्चन इन ड्यू डिटेल, ये अपलोड भी हुआ था। तो अब अवाम को अभी भी सुकून नहीं मिला और अवाम इंसिस्ट कर रही है कि वी शुड राइट इट डाउन। तो हियर वी गो। हो सकता है इस पे 2 लेक्चर्स लग जाएं, आज और कल। कोशिश करते हैं, वैसे तो 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए, लेकिन दरमियान में क्योंकि बातें भी होती हैं इसलिए हम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। जस्ट अ क्विक क्विक रफ ड्राफ्ट, ठीक है। डिटेल्ड, वही ना, डिटेल्ड रफ ड्राफ्ट नहीं बना रहे, वही मैं अपने लिए ताकि हम लिखते हुए हम करें। तो हमने कहा था सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल मनी सप्लाई, वी एग्री टू इट, यस दे कैन कंट्रोल मनी सप्लाई। किस तरह? मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था? फिर हमने ये कहा था कि इंटरेस्ट रेट के साथ भी इसका लिंक सारा, ठीक है, कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल कॉज इन्फ्लेशन। इसको हम एडीएस के थ्रू भी दिखाएंगे। नंबर नहीं थे कल उसके, क्या कहते हैं उसके, लिक्विड, व्हाट यू कॉल इट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर इक्वेशन। लेकिन क्योंकि मेरा दिल बहुत कर रहा है तो मैं तो फिशर इक्वेशन डालूंगा ही डालूंगा। फिर उसके बाद आ गया, देयरफॉर सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो मैं क्या लगाऊंगा? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स हम बढ़ा देंगे और मनी सप्लाई हम कम कर देंगे। ये सारी गेम हम समझा देंगे। क्रेडिट रेगुलेशंस भी है बाय द वे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इसको भी हम दिखाएंगे। वही ना, वो उधर कर, सेंट्रल, देयरफॉर सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे करेंगे कंट्रोल? तो उसने ये, वो तो कह रहा है कि मनी सप्लाई बढ़ती है। तीन तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ना, कल हमने देखा था मार्क्स स्कीम में भी। अच्छा, जल्दी से मुझे ये बताएं कि एडीएस यहां बनाया जाए कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल कॉज इन्फ्लेशन, या एडीएस यहां बनाया जाए पॉलिसी के साथ? क्योंकि 2 दफा बनाने का तो फायदा ही नहीं उसका। पॉलिसी के साथ बनाए, या एक और काम कर सकते हैं, पॉलिसीज के साथ हम इंजेक्शन लीकेज बना दें, जो कि ऑब्वियसली जरूरत नहीं थी, कल हमने देखा था। 45 डिग्री एंगल, वो भी तो इन मनी क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लेशनरी गैप को कम करने के लिए दिखाया जा सकता है। हाँ, जरूरत नहीं है, वैसे जज्बाती होने की जरूरत नहीं। सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट कंट्रोल मनी सप्लाई, लिक्विडिटी ट्रैप कर देंगे। अच्छा, इसको और इसको मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों को इवैल्यूएशन में मिला देंगे क्योंकि मोरलेस एक ही चीज है। तो क्रिटिक जितनी भी है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वाली बात कर देंगे। हाउ सेंट्रल बैंक्स रिस्पॉन्ड, कमर्शियल बैंक्स रिस्पॉन्ड, ये बात कर देंगे। तो बेसिकली क्रिटिक ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। टाइम लैग की भी बात हो सकती है, हालांकि ये सबसे क्विकेस्ट है। 4 काफी है। लिक्विडिटी ट्रैप हो गया, कॉन्फिडेंस की बात हो गई, कमर्शियल बैंक्स रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं, टाइम लैग हो गया, और लिक्विडिटी ट्रैप हो गया। बनाना नहीं है लिक्विडिटी ट्रैप, सिर्फ समझाना है। और फिर ये भी बता देंगे कि हमेशा मनी सप्लाई बढ़ती है तो जरूरी नहीं है इन्फ्लेशन हो। दैट डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट सप्लाई एज वेल, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल। ठीक है, शुरू हो जाए फिर। शुरू करेंगे। सेंट्रल बैंक्स have multiple objectives such as regulating the monetary policy, controlling the exchange rate, the exchange rate, और क्या भाई, banker of the banks and government, etc. Central banks use different tools to control
money supply such as open market operations, controlling Walaikum salam, the reserve ratio, controlling the reserve ratio. और क्या है भाई? हाँ वो कल वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम बैठ के, ये यहां से शुरू. Controlling the reserve ratio, reserves ratio नहीं reserve ratio. और क्या है भाई? Controlling the reserve ratio, open market operations, quantitative easing, etc. Open market operations of the central bank involve buying. हाँ, अभी हम पहली चीज को कर रहे हैं कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, तो हम कह रहे हैं बिल्कुल कर सकता है. कैसे यार? टाइम पे तशरीफ लाया करो ना, गाड़ियों में बैठे रहते हो तुम लोग नीचे. सारा हिला दिया. अच्छा चलें. Open market operations of the central bank involve buying and selling of government bonds slash treasury bills. These are loan instruments issued by the government. The government to central bank, issued by the government to central banks, commercial banks, and also to other financial institutions. In order to increase money supply, the central bank redeems का मतलब buys bonds slash treasury bills this increases their demand and reduces their supply in the money market, leading to an increase in their market value. As the return of bonds, bracket में लिखनी yield, is fixed as a percentage इस तरह नहीं लिखना, of the face value
the yield falls. Commercial banks reduce the market interest rate. Reduce the market interest rates due to this lower yield of bonds, which leads to an increase in borrowing and hence increases the money supply. ओहो, मनी सप्लाई कौन समझाएगा? सबसे शुरू में क्या करना चाहिए था? मनी सप्लाई समझानी चाहिए थी। अब एकदम याद आ गया क्वेश्चन लिखते हुए कि मनी सप्लाई तो समझाया ही नहीं, क्या करें? स्टार बना के ऊपर लिख दें टू ऐड ए डेफिनेशन। क्या टेंशन? कोई टेंशन नहीं, ठीक है, ये अच्छा हुआ एक टेक्निक पता चल गई। स्टार बना के ऊपर ना लिख दिया करें, उसी के अंदर लिख दें, कभी भी लिख दें, वो तो चल जाएगा। इवैल्यूएशन पे पहुंच गए फिर क्या ही हो सकता है, फिर भी लिख दें टू ऐड ए डेफिनेशन, hence increases the money supply in circulation. To add a नहीं रुक जाए, to reduce money supply, the central bank sells these bonds, leading to a higher interest rate. To add a definition, और ये भी अभी हमने जज्बाती होकर बहुत ज्यादा लिख दिया, समझ रहे हैं? ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मनी सप्लाई को आप और कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चले जरा ज्यादा लिख है। और जो लोग सिर्फ ये क्वेश्चन देख रहे हैं वो इसकी वीडियो देख लीजिएगा, उनको समझ आ जाएगी कि चक्कर क्या है, ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म और ये बॉन्ड शॉन्ड्स की गेम क्या है। टू ऐड अ डेफिनेशन, मनी सप्लाई can be defined as currency notes and coins in circulation currency notes and coins in current account, deposits of firms and private households, in commercial banks and short-term saving deposits. This is referred as narrow base or narrow definition of money. Broad base
इंक्लूड्स, ब्रॉड बेस में क्या आता है? ब्रॉड बेस में क्या आता है? इंक्लूड्स नैरो बेस along with broad base includes narrow base along with long term saving deposits, long term saving deposits. अगली बात करें, foreign currency reserves, gold reserves, foreign currency reserves, gold reserves, and mutual funds. Mutual funds. The central bank can also use reserve ratio to control money supply, to control money supply in an economy. Reserve ratio is a percentage of total deposits that commercial banks are required to keep as reserves in liquid form that cannot be further invested or loaned. Reserve ratio is reduced to increase money supply and increased to reduce money supply. क्वांटिटेटिव ईजिंग को खा जाए, बस दो हमने बता दिए बहुत है, और ये बहुत ज्यादा बता दिए। कितनी होगी लेंथ? एक पेज हो गया? ठीक है जी। अभी तक व्हाट हैव वी डन? वी हैव एक्सप्लेन्ड central banks can control money supply. Yes, we have explained that central banks can indeed control money supply. डन हो गया? आगे आ जाए। An increase in money supply will cause inflation. मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। An increase in money supply can directly lead to demand pull inflation. An increase in money supply can lead to demand pull inflation. As money supply is increased, it leads to consumption, leads to higher consumption, leads to higher consumption and government spending. It leads to higher consumption and government spending.
which are two components of aggregate demand. C plus I plus G plus X minus Y. A rightward shift of aggregate demand leads to higher price levels in the economy, as shown below. In figure 1 from P1 to P2. As shown below in figure 1 from P1 to P2. तो हमने जरा पहले ही समझा दिया ग्राफ को, ताकि हमें बाद में ग्राफ को ज्यादा समझाना ना पड़े. सिंपल सादा एडीएएस क्लास 2 वाला जो आपने पढ़ा था. एक्सेस खुदा का वास्ता ठीक लिखिएगा. अभी मैं मॉक्स चेक कर रहा था. सबसे जो मेरा पागल हो गया हूं मैं एएस में, खास तौर पे माइक्रो में रियल जीडीपी एवरेज प्राइस लेवल लिख रहे हैं, मैक्रो में प्राइस और क्वांटिटी लिख रहे हैं. अभी तक आप लोगों को ये नहीं याद हुआ. एवरेज ना, वीकेंड लग जाएगा यार, मॉक चेक करते हैं. क्या था एमसीक्यू? आसान था. एग्रीगेट सप्लाई, ये आ गया आपका y1 p1, ये आ गया एडी जो कि मनी सप्लाई की वजह से बढ़ गया. ये आ गया आपका जीडीपी भी बढ़ गया, लेकिन उसके साथ साथ प्राइस लेवल्स भी. इसको हमने दे दिया फिगर 1 की हेड. ये जल्दी करो, स्पीड मारो भाई. इस तरह तो हमें 3 क्लासें लग गई. ये खैर हम जज्बाती हो रहे हैं, ज्यादा लिख रहा हूं मैं. मुझे रोकें अगर मैं ज्यादा लिख रहा हूँ बहुत, क्योंकि अभी तो हम नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस में ही हैं. लेकिन ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं लिख रहे. अब हम थोड़ा सा मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट, मॉनेटरिस्ट्स का जिक्र करेंगे. ठीक है. और उसके बाद स्ट्रेट वे हम किधर चले जाएंगे? पॉलिसीज की तरफ. डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन की डेफिनेशन? गुड चेक. इन्फ्लेशन की डेफिनेशन भी दे दें. दे दें जी, दे दें. इन्फ्लेशन की डेफिनेशन भी दे दें. गुड चेक, गुड चेक. शुरू में दे देनी चाहिए थी, कहीं कहीं भी फिट कर देते हैं. ठीक है. हाँ, मतलब आगे कर देते हैं बातों में. इन्फ्लेशन ब्रैकेट में कैसा, एक और तरीका बता दिया, एक और हैक बता दिया आपको. persistent rise in the general price level of an economy over a given period of time inflation can also be caused by नहीं, ये तो बताना ही नहीं है हमने, तो उसका है सिर्फ मनी का है. इन्फ्लेशन मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट बहुत इसको सीरियसली लेते हैं. इन्फ्लेशन is always and everywhere
a monetary phenomenon phenomenon as believed by the monetarist school of thought. They show that money supply and inflation are directly and equally proportional if the volume of output and velocity of money is held constant through the Fisher equation. That is, MV is equals to PT. इसको वैसे इस तरह लिखने के बजाय आपको बातों में बताना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी हमने बहुत ज्यादा बातें कर दी, तो हम, और ये मार्क्स स्कीम में जिक्र भी नहीं था लेकिन होना चाहिए था, क्योंकि मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट यही तो कहता है कि मेन लड़ाई झगड़े यही है कि मनी सप्लाई जब भी आप बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट इन्फ्लेशन होगी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस या फिर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। हाँ जी, कैसा, बात समझ आई? अच्छा जी, क्या हो गया, अब हमने क्या कर लिया, अब हमने बता दिया है, ये हमने पहले कर लिया था, अब हमने कहा है कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल कॉज इन्फ्लेशन, ये भी हमने प्रूव कर दिया। कैसा, अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, क्या प्रूव करने जा रहे हैं, अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। हाँ जी, सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा के, वो भी दिखा देते हैं फिर इनको, जब पढ़ा है हमने इतना कुछ। सेंट्रल बैंक्स कुछ लिंक नहीं बनाया हमने ऊपर वाली पैराग्राफ में और इसमें, है ना, खैर चले जाने दे। सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन using central banks can control inflation using what, contractionary monetary policy, where interest rates are increased, money supply is reduced, and credit regulations
टाइट है। By increasing interest rates, to open market operations or direct intervention, the cost of borrowing, chain of analysis, the cost of borrowing increases, leading to a decline in loans slash borrowing, which further reduces investment and government expenditure. Consumption also falls due to less borrowing and more savings, as returns on savings are even higher. These reductions in consumption expenditure investment and government expenditure reduce what? Reduce aggregate demand. Reduce aggregate demand, leading to fall in average price levels and hence inflation. कैसा? हम वो भी बता सकते हैं, हॉट मनी फ्लोज वाला, वो भी बता दें या ना बताएं, या काफी है? कितना हो गया पेज? खैर पेज का तो हिसाब नहीं है, लेकिन फिर भी कितना हो गया? हाँ, 2 पेजेस, 2.5 पेजेस, ढाई, काफी। एक पेज और लिखेंगे तो अभी वैल्यूएशन में एक ही पेज लिखना है, 1-1.5 पेज फिट हो जाएगा हमारा काम। या फिर बता दें वो भी, अगर आप बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, हॉट मनी फ्लोज वाला। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हॉट मनी फ्लोज ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, मार्क्स नहीं तो हमें क्या पता। सब देखे ना, सबसे रिलेवेंट जब भी मैं तो ये देखूंगा क्या, इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल कॉज इन्फ्लेशन। एक तो एडी वाली बात आपके जहन में आएगी, एडी बढ़ता है। दूसरी बात आपके जहन में आएगी मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट, जो कि पागल हैं, जो कि कहते ही हैं, जो बने ही इस पे कि आप मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन। तो क्यों ना लिखूं मैं वो बात? ठीक है, वो तो एग्जामिनर बेवकूफ है कि उसने नहीं लिखा, तो लिखना चाहिए। मैं तो देखें और क्या, फिर हम बताएं तो जरूर बताएंगे। उसने मार्क्स की में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हमें लिखनी चाहिए। लें जी, चलें, अगर हम हॉट लिख लेते हैं, हॉट मनी फ्लोज पे लिख लें, फिर उसके बाद हाउएवर करके उस पे चलो। हायर इंटरेस्ट रेट्स
may also attract hot money flows into the economy, appreciating the exchange rate. This appreciation will make exports less competitive and imports dearer, dearer as in cheap. Reducing the balance of trade bracket में exports minus imports जी dearer DEARER, reducing the balance of trade, exports minus imports, which further reduces total demand and hence reduces inflation. अच्छा, अब हम पहले क्रिटिक करेंगे किस पे कि सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकते और मनी सप्लाई को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखें, ये आ गया। दो चीजें हम देख रहे हैं, क्या सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल मनी सप्लाई, अब हम बोलेंगे नहीं, सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट कंट्रोल मनी सप्लाई। और फिर हम देखेंगे सेंट्रल बैंक्स कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन, नहीं, सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो ये हमारी इवैल्यूएशन होगी। और फिर हम ये भी करेंगे कि हमेशा मनी सप्लाई का इंक्रीज इन्फ्लेशन कॉज नहीं भी करता, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन वेदर एग्रीगेट सप्लाई इज इंक्रीजिंग और नॉट। तो ये हमारा सवाल अधूरा रह गया, इसको हम करेंगे अगले लेक्चर में और अगली वीडियो में, जो कि होगी इंशाल्लाह कल। तो A2 की क्लास हम यहां पे लगाते हैं आज ब्रेक।